Hello, everyone. Welcome to our session. How was your exams? We will start on MongoDB. We have already started on MongoDB. We will try to understand how MongoDB works. Okay. And these two classes that we are going to have today and tomorrow are going to be very important in terms of understanding the database aspect. Okay. And we have already seen a very brief on how Express works, but we are yet to implement it in a coding way, which we will do once we understand how databases work. And then next week, couple of classes, we will be able to create APIs for ourselves. We will be creating APIs, and for that, we need the knowledge of database. And while we are creating APIs, you will get to understand that how your Express works, and that way you will be able to connect all the different technologies for the backend in one go. Okay, so I think people are here and people will be joining. Today we are not having any live streaming going on because of some permission issues. So therefore you will be getting this on from the cloud. So it might get a little delayed than usual, but nevertheless you will have it. Okay, so shall we start? I think I have waited enough for people. Okay, so this is what we were working on, and MongoDB का हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट करने की कोशिश करी थी. So what do you understand by MongoDB till now? आज काफी कम लोग हैं, तो मेरे को लग रहा है रिस्पॉन्स ना के बराबर होगा आज. MongoDB कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये बता सकते हो? I told you. C++. Correct. Yes. All right. So what we will do now is we are going to understand what MongoDB actually is. And for that, we would require the whiteboard. So you might have worked with the relational database, relational DB, and now we have non-relational databases. Okay, relational DB. So in the relational DB, we have schemas, we have primary key, foreign key constraints, all those stuff. So MySQL is one such relational database. Then you have Postgres, which is a relational database. Non-relational databases are the ones where we have MongoDB as of now, and there is no relation that is created in terms of table. So when I say that, what I mean is, let's go ahead and understand the difference between the two. So we have a table and it has, let's say, an ID, name, and age. Okay. And this table will have a values like this, name, age, and let's say 29. And then we have another value of, I will ID it as 2, Jane, and 27. Okay. So this is a table format. And now we have another table which says occupation, let's say. So where is John working, or where the person is working, something like that. So we will have again an ID for this one, company, or let's say location, address. So we have these two things. Now, if we want to connect these two tables and get a detail of, I want to get the address of John. And what we have done is we have created this ID and connected this address over here. Let's say London. So how do we connect this? If I ask you a question that give me the address for John,
I ask you some question like this, how will you solve this? What's your take on solving this question? कैसे connect करोगे? So I need a way to connect John or this table to this table. I need some way to connect to this so that I can fetch the address for a specific person. So let's say John lives in London and I have that entry. So I need a way to connect to this table and I will use this ID as a connector. Okay. And I can call this as, let's say, user ID. ठीक है, एक field है which is called user ID और वहां पे मैंने वैल्यू दे दिया 1. तो अब ये कनेक्शन से if I try to fetch this data of John, so I would say that okay, connect my table of users to the table of addresses and I can fetch the details. So this way I can get name and address, right? Does it make sense? Easy. ये एक हमने रिलेशन बनाया है दो टेबल्स के बीच में. And this user ID will become the foreign key in this scenario. So user ID is the foreign key because using the foreign key we connect to the main table. तो ये आईडी सेम होना चाहिए यहाँ पे. तो ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस हो जाता है और इससे बहुत कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं. बट फॉर अ वेरी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, sorry, database, we have this relational table. There is a relation between the user table and the address table. And we call this as columns, right? These are columns and rows. And we call them as tables. How does MongoDB handle this? Now, MongoDB, this is a non-relational database. Now we are talking about non-relational DB, which is our case. In this scenario, it will mostly, the data will be in the form of JSON. Okay. So what we will create is we will create an ID and we will specify कि ठीक है, ID होना चाहिए string value का, फिर name होना चाहिए string value का, not in inverted commas, but I'm just specifying the data type. और age होना चाहिए number types का. ओके. अब मेरे को रिलेशन निकालना है एड्रेस का. तो इसके अंदर हम एक एड्रेस बना देंगे और इसको अब अपना स्पेसिफिकेशन देंगे. ओके. So we are going to give a specification like this, and inside this I'm going to say ID होना चाहिए string, again similar, and address will be string again. ठीक है. And we don't need this connection of user ID anyway because अब क्या है, this looks like an object, right? This looks like an object. Do you guys agree? So if I want to access anything from this database, what I could do is I could go ahead and say dot ID or dot address dot string. तो ये जब save होगा, this will be called as a document. So in relational database, we don't call it as tables, we call it as documents. So this is a document. Okay. There is a document, and inside the documents we have fields. So जो आपका rows and columns होता है, that is termed as fields in MongoDB. And inside that, the table, basically जो हम लोग table करते हैं, that will be called as collections. So please get familiar with these terminologies: collections, documents, and fields. Any doubt till here?
How does it relate? Yes, document is like one entry, row. Collection is the table, document is the row, field is the column. Okay? Relate कर पा रहे हो? ठीक है? तो the success of yes, it is a NoSQL DB. It's a non-relational database or a NoSQL DB or a SQL DB. So SQL एक लैंग्वेज होती है, क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसमें हमें रिलेशनल डेटाबेस से क्वेरी करने का मौका मिलता है. तो जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था on this part, let me just draw a line over here. So when I asked a question like this, what we will use to solve this will be called as SQL, and that is a different course altogether. But उसका अपना एक तरीका होता है. So we will say select name from address, sorry, user join address, let's say. So where user.id is equal to address.user.id. तो हमने एक क्वेरी की है. दिस इज कॉल्ड अ क्वेरी लैंग्वेज, और ये SQL helps me to query this on the databases, right? So this will understand कि चलो ठीक है, there is a different there is a syntax to this, and this is another language altogether, and you need to write this kind of a language on the databases which are relational in nature. When we talk about MongoDB, what we are going to do is we will have these fields as, let's say, हम लोग को एक JSON format में data आता है. So JSON format का data होता है ये, and this is becoming very popular nowadays. Now since this is a JSON format, we will be using a dot notation. So according to your understanding, how will we access the address of John? Think in terms of objects. ये हमने एक उसका schema बनाया. This is called a schema. Okay, schema is like scheme. कैसा मेरा data दिख रहा है, कैसा मेरा data दिखने वाला है, what is the data going to look like, a model, right? So this becomes there is a schema which contains models inside it, something like this. ठीक है? तो ये मॉडल है डेटा का. अब हमें इस स्कीमा का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, या इस मॉडल का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, राइट? और वो इंस्टेंस हो जाएगा मेरा जॉन का एंट्री, या वो इंस्टेंस हो जाएगा मेरा जेन का एंट्री. जेन की एंट्री हो सकता है अलग इंस्टेंस है, जॉन की एंट्री इज अनदर इंस्टेंस. डज इट मेक सेंस? Taking you back to our JavaScript classes. Yes, no? This is very important, guys, to understand MongoDB. Because after this, I'm just going to write some similar looking JavaScript code, which might confuse you. So you have to tell me whether you get this one or not. So ये जो हम मॉडल क्रिएट करेंगे, तो हम लोग एक यूजर मॉडल क्रिएट करेंगे. ठीक है? अब इस यूजर मॉडल का जैसे जैसे न्यू यूजर मॉडल अगर क्रिएट करते हैं ऐसे करके, तो इसमें हम लोग ने जब भी क्रिएट किया तो एक जॉन की एंट्री क्रिएट करेंगे with all the details like ID, name, age, something like this. Yes, it is like creating an instance of a class. Yeah, makes sense?
यहाँ पे हमने टेबल बना दिया, टेबल क्रिएट कर दिया। एसक्यूएल के दो अलग तरीके होते हैं, एक होता है डीडीएल और एक होता है व्हाट वाज द अदर थिंग, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल अपना जावास्क्रिप्ट को ही यूज कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम टेबल्स भी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो MongoDB इज गोइंग टू रिसीव अ मॉडल की स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्कीमा, and then I'm creating a schema over here. Inside that, I'm defining the model, and whenever I'm putting an entry, I am creating an instance of that model and passing a value to it. Right? Relatable. देख रहे हो, what is the advantage of having one single stack from front to back? Like even in the databases, we are using the same concept. Now, जो भी instance है, उसको हम access करके, so basically whenever I am creating an instance, I am creating a document. Okay, that will come as document. तो दैट डॉक्यूमेंट से अगर कुछ एक्सेस करना है तो उस डॉक्यूमेंट को डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं. सो इफ आई हैव टू एक्सेस समथिंग लाइक गिव मी द एड्रेस फॉर जॉन, आई कैन जस्ट गो ahead, access the instance of John and say dot address, and it will fetch me the address of John. Make sense? So if we understand all this, do you want this screenshot for yourself? Should I save it? I will save it. Okay, so this whole system is called your MongoDB or a database system. DBMS होता है, right? It is called a database management system. ठीक है, तो database management system है हमारा ये. But ये system हमारे this whole system is not the part of my Node.js code जो हम लिखते हैं. This is another system running in some other server. It has its own way of understanding things. Even though it is a MongoDB server और हमें लग रहा है कि ये JSON notification में data देता है हमें JSON format में, but still we need to convert this JSON data into objects. Remember stringify and parse? Did we talk about that? तो इसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, बट समझेगा कैसे मेरा Node.js? How will that understand that, okay, how should MongoDB understand my instruction? I send this instruction, I send this instruction to database normal code की तरह कि जैसे हमने अपना Node.js में जावास्क्रिप्ट लिखा है, उससे हमने फेच कर लिया ये कि हमें एड्रेस दो जॉन का, बट डेटाबेस को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी. डेटाबेस won't be able to understand that. So we need an interface which can interact with the database as well. Okay, so to do that, we use these things called ODMs, object data model. These are called object data models, which are ODMs. Now these ODMs are going to be something that is very important in translating your backend into a language that my MongoDB will understand. So let's represent that. Okay, now this is our backend जहाँ पे request आ रहे हैं from the front end, and यहाँ पे कुछ functions हमने लिखे हुए हैं. Let's say there is a function called get users. ठीक है, ये function है. अब ये function is kind of making a request to the database. This is making a request to the database saying that give me the data of all the users. Now here I need to fetch data from the database, right? I need to fetch this data, and we have a kind of a document that is over here, and let's say user database है और name और age value है, name है और age value है, और हर database के साथ एक ID भी associated होती है.
right? Which is a unique identifier, which helps us to identify. अब डिपेंडिंग ऑन जो भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं उस टाइप का डेटा हमें डेटाबेस से चाहिए. मेक सेंस? सो टू डू दैट I need something that can give me that flexibility of interacting with the database and fetching the database, this document over here. So to do this, we use this ODMs that you see. And one such ODM is called Mongoose. Okay. So what we are going to do is we are going to require Mongoose. जैसे हमने HTTP का मॉड्यूल रिक्वायर किया था फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए, वैसे हमें Mongoose का इंस्टेंस चाहिए होगा to connect my backend to the database. I hope this makes sense. Yes, no, maybe will be helpful because most of the time what I have seen is लोग MongoDB में हाथ खड़े कर देते हैं. I hope आप लोग उनमें से ना हो कि MongoDB तो समझ में ही नहीं आया, पता नहीं क्या चल रहा था. All right, ठीक है. कभी भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरे को बता देना. Okay, so how does this work? How does this work? How do we create this MongoDB? Now आपने MongoDB का इंस्टेंस अपने locally create किया हुआ है, but isn't won't it be easier if it is always deployed and I just need to connect it to some like user URL and connect it to that server? It will be much more easier, right? So we need a way to connect it before we start diving into using Mongoose. We need to create a space where my data can be stored. ठीक है? तो मैं आप लोग को आज इंट्रोड्यूस करता हूँ Atlas के साथ. What is Atlas? All right. So उसके लिए I will go to Mongo Atlas. Now Atlas जो है वो MongoDB का cloud database service है. So it's a database as a service. DaaS. Software as a service होता है, platform as a service होता है. This is a database as a service. ठीक है? And for this, I will share the screen with you. Okay. So you guys see this? Mongoose? Oh, sorry, Mongo Atlas. So this is the URL that you go to, and this is basically going to be like a server which is already deployed for the database, and you are going to create or use the cloud service to create your database. जो अभी हमने अभी अपने उसमें देखा इंस्टेंस में, तो हमारे डॉक्यूमेंट कलेक्शंस फील्ड्स जो भी हम डिफाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली जाके मेरे डेटाबेस में सेट हो जाएगा. तो वो सेट कैसे करेंगे? सेट करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, साइन इन करते हैं, एंड आई विल टेक यू थ्रू द प्रोसेस दैट हाउ यू क्रिएट एन अकाउंट इन दिस एटलस. तो मैं लॉग इन करूंगा गूगल से. आई हैव अ फ्री अकाउंट, बट फॉर दैट आई विल हैव टू पॉज द शेयर. So you can also log in with your Google, and let's go and create from one of the Google accounts. Give it a second. Okay. So now once you log in with a Google account, it will ask you some query and I will say link my account. Okay? Link my account, and I am logging in with this particular instance. और इस अकाउंट के लिए हम लोग एक पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं. सो आई विल यूज सम पासवर्ड फॉर मी एट द मोमेंट. आई होप आई डू नॉट फॉरगेट दिस. Yeah. So I will confirm. Invalid. This is your Gmail address. We have matched it to your MongoDB account. Okay. Please provide a valid email address. Verify your identity by entering your password for the MongoDB account below. Okay, that means I have created some account previously. One second. I need to go back.
I will say sign up. So let's see, I'll just say forgot password @cypherschools.com. That's a forgot password. Please check your inbox. Just a second. I don't remember when I created Cypher Schools का account. How many of you have already created account in Atlas though? कोई है जिन्होंने Atlas में account बनाया हुआ है? Okay, विक्रम ने बनाया हुआ है. राजकमल ने भी बनाया हुआ है. All right. Just a second, I'll just verify this password. अंशुमन ने नहीं बनाया. ठीक है, बना लेना. Okay. I'm just setting the password in the background. @cypherschools.com, and the password is going to be something easy to remember. Okay, so I hope it works. Success. All right, so let's go log in. Next. All right, so if I log in, so it will take me to a account which is already there. But if you are logging, if you have already logged in previously, what you would need to do is you need to create a cluster. So how do we do that? So I will say create a new cluster. ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा. And you would want to use a cloud provider, so we will stick to AWS and maybe Mumbai, क्योंकि ये पास में है सर्वर, तो मुंबई वाला सर्वर चूज कर लिया. And since I have already created a server free server over here, what it is going to happen is it is not going to provide me with some scaling options. It is going to give me some values. But आप यहाँ पे free server choose कर सकते हो. आप choose कर लेना ये, and additional setting में कोई ज़रूरत नहीं है. Just let it be whatever it is, and yeah, and name the cluster over here. So once you name the cluster, you can name, like, once you come back and you can see the cluster. Okay, so this is a very basic process, and it will take some time to create a new cluster. So right over here you see a test cluster which I have created previously. Now जब आप ये create करते हो तो आपको सबसे पहले database access देना पड़ता है. So I am going to give an access to this database, like कौन सा user इस database को access कर सकता है. ठीक है, so I will say new user. ये यूजर नेम और पासवर्ड है फॉर जस्ट द डेटाबेस एक्सेस ऑफ दिस क्लस्टर जो हमने एक बनाया है अभी. ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं और अलग अलग डेटाबेसेस में अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर. बट इनिशियली हम एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारे डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं. सो न्यू यूजर 123 एंड आई विल यूज अ सिंपल पासवर्ड. जो यूजर नेम है वही पासवर्ड बना देता हूँ अभी. ठीक है, ओके, ठीक है, and I will copy this. Then you provide the privileges. So privileges is basically कि आपके database में किस type के admin
एक्शंस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं सिर्फ, या सिर्फ राइट, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव अ ऑप्शन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बोथ फॉर दिस डेटाबेस. ठीक है. And I'm just going to add this user. So once I add this user, there will be a user who will be able to access the database that I'm going to create. Now, once I have created a database inside my database user, inside this, I'm going to add the access कि कौन इस database को access कर सकता है. Like IP address. If if I'm accessing it from my system, local system, then only I will be able to read and write on that, using that credentials that you just saw. If someone else is trying to access this database with the URL that will be generated, then you are not able, or you are not supposed to do that. Okay. So add IP address karte hain. You guys can see the screen, pop-up wala screen. Are you seeing the pop-up screen? Sometimes Zoom doesn't show pop-up screen. Okay. So you see there is two options over here. One is add current IP address. Another one is allow access from anywhere. So allow access from anywhere is like anywhere on the network. Basically, you, I, or any third person can access this database. But I don't want that because it might create a security threat. If I have a data which is, or if they can uh, hack my password of username and password for the database. So there are ways. Obviously, you can allow access अगर आपने कुछ open data create किया है, or if you want everyone in the world to access it, you can use this. But I am going to add my current IP address from where I am accessing this network. This makes sense. मतलब मेरे local system से ही ये जा सकता है. मतलब same internet, same IP address से ही हम बार-बार इस database को access कर सकते हैं. और इसको comment दे देते हैं local system. Okay. All right. So you can choose an option कि छः घंटे के बाद ये वाला IP address जो है वो delete हो जाए or something like that. I don't want that for an option right now. I want the access to be there for most of the time, and I'll confirm this. So it says you will only be able to connect to your clusters from the following IP address. तो ये हम cloud पे काम कर रहे हैं. This is a cloud where I'm working on. Now, apart from this, what I want to do is I want to connect to this database. How do I connect to this database? So for that, I have the network access. All right, clusters. So when I go to the cluster, there is this option of connect. Once you create a cluster, इसके अंदर आपने एक database user बनाया है और एक IP address दिया है. तो you press this connect. Now this is giving you some options that how should I connect from this for this one. Now we will be connecting it from the application. When I talk about application, that is going to be my Node.js application, or from the MongoDB Compass or any kind of CLI tool. So हम लोग MongoDB Compass से connect करते हैं. ठीक है. MongoDB Compass से इसलिए connect करते हैं क्योंकि ये MongoDB का ही provided है. And this can show me some data and some dummy stuff getting created. So I'm saying ki connect. I do not have a MongoDB Compass, so you can download it. Just run through it. It will automatically download and run to it. If you don't have it, if you have it, then there is this connection string. So basically, this connection string is something like a URL that we were connecting from one point to another. जैसे हम लोग HTTPS and the name of the website करते हैं या localhost name of the website and port number करते हैं, that is similar, but the protocol is different. It is a MongoDB plus SRV protocol, which is their own framework kind of a thing. Inside, under the hood, it is still working with your FTP file transfer protocol because we will be interacting with a lot of data and stuff like that. So this is a protocol that they have created, and this is the URL which I need to access or connect to when I am trying to access this database.
समझ में आ रहा है यहाँ तक? Any doubts here? Yes, no, maybe. अच्छा, नो डाउट्स पे नो आ रहा है। मेरे को लगा, मैंने पूछा कि समझ में आ रहा है तो सबका नो आ रहा है। डर गया मैं एक सेकंड के लिए। कोई ऐसा है जिसको कुछ पूछना है अभी बिफोर आई गो फर्दर? Okay, I'll go ahead. So what I'm going to do is I am going to copy this, but you see there is a password required over here. Okay, तो जब आप कॉपी करोगे तो जहां पे भी इसको पेस्ट करना है या जहां से भी हमें कनेक्ट करना है, हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। और ये पासवर्ड किसका है? जो भी हमने यूजर बनाया था अभी, राइट? सो बेसिकली वही यूजर ये एक्सेस कर सकता है। गलत पासवर्ड दोगे तो कनेक्ट नहीं करेगा। सो आई एम कॉपिंग दिस। ओके, आई हैव कॉपीड दिस। मेरा काम यहाँ पे हो चुका है अभी तक। ठीक है, मैंने एक इंस्टेंस बना लिया डेटाबेस का। अब इस डेटाबेस को हम यूज करते रहेंगे। Okay, I have copied this. Now what I will do is I will go back to my Mongo Compass. So once you install Mongo Compass, I will share the screen for Mongo Compass, and you open your Mongo Compass, it is going to ask you for your new connection. Basically, this is a tool where you can see the data. Okay? Nitin, you want to say something? You have anything to say? You can use Robo, but Robo में क्या है ना, ये जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक अपने कंपास के लिए रखा हुआ है। सेम काम करेगा। नहीं नहीं, कंपास इज नॉट एन ओडियन। कंपास इज लाइक अ GUI टूल। देयर इज अ GUI टूल। ठीक है, तो कंपास बेसिकली आपको डेटा दिखाने के लिए, आपके टेबल्स कौन कौन से हैं, आपका डेटा क्या क्या है, वो दिखाने का है। अभी हम लोग ओडीएम तक पहुंचे नहीं, हम लोग ओडीएम में जाएंगे अभी। या सो अब मैं ये पेस्ट करता हूँ। एडिट, एक सेकेंड, व्हाई कांट आई पेस्ट इट? नो नो, न्यू कनेक्शन, सॉरी। वी विल गो टू न्यू कनेक्शन एंड पेस्ट इट। सो दिस इज द यूआरएल फॉर कनेक्शन। नाउ यहाँ तक तो ये डेटाबेस कहाँ पे डिप्लॉयड है और कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा है वो है। एंड आफ्टर दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। कि लेट्स से अगर हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस है या कंपनी है कोई, लेट्स से साइफर स्कूल ही है नाम कंपनी का, तो साइफर स्कूल का डेटाबेस है और उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे। तो अभी हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं एक, जहाँ पे हम स्टोर करेंगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स। ओके, we are going to create a collections, and inside those collections we are going to create documents. All right, तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड की जरूरत है जो कि मैंने वही यूज किया था। So I will change it to the password, and I'm going to create a test database. Now if I connect on this, it is going to connect over here, and there is some admin and local which is predefined, वो बन चुका है। तो हमारा एक डेटाबेस अप एंड रनिंग है फ्रॉम द क्लाउड। क्लाउड से हमने ये कनेक्ट करके रखा हुआ है। एज यू कैन सी इट रन्स ऑन द पोर्ट नंबर 27017। सो इसका भी एक स्पेसिफिक पोर्ट है। MongoDB usually runs on the port 27017. So these are the predefined data. This is the predefined database जो कि required है। इसमें भी कुछ नहीं होगा, और इसमें जो भी है ये एज अ कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कि क्लस्टर मैनेजर क्या है, उनका क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन है, कि लोकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैचिंग विद द सिस्टम एंड ऑल दैट स्टफ। हमने अपना टेबल अभी तक कुछ नहीं बनाया, हमने अपना कुछ नहीं बनाया, बस ये एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम है टेस्ट, और उस टेस्ट पे अब हम टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, देयर इज अ डेटाबेस कॉल्ड टेस्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट tables on that.
So how do I do that? How do I make those tables? अब काम आएगा हमारा ODM. तो अब हम लोग चलते हैं अपने डेटाबेस पे, which is my code. So I'll remove this app first. Let's remove this. Delete it. Express नहीं चाहिए अभी. MongoDB पे जाएंगे. Clear it out. cd to Mongo. Okay. I will say npm init. And I'm going to create a package for this one first, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करेंगे क्योंकि अब हम आ चुके हैं नोड पे, राइट? So I'll call this MongoDB TDD. I'll tell you what TDD is. अच्छा, capital letters नहीं हो सकता, sorry. MongoDB TDD. Version 1, description, MongoDB, server.js, backend, no test command, no git repository, no author, nothing. Yes, I'm okay with this. So I'll confirm this. Okay, so inside MongoDB, we have created a package.json. अब इस package.json में सबसे पहले हम लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, instead of writing the code directly and start using MongoDB and stuff like that, we are going to use a framework of testing. Okay, this is a little advanced concept. I thought I'll give you a look and feel of how actual working of backend works. तो हम लोग पहले टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं जो भी हमारा पर्पस है किसी भी डेटाबेस या किसी भी बैकएंड या किसी भी एप्लीकेशन का, उसको पहले टेस्ट करते हैं और उसके लिए फिर कोड लिखते हैं. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. So to do that, we would require some library, okay? And that library is going to be your Mocha library. What are Mocha libraries? Basically, Mocha libraries are nothing which will help you to replicate or write the test cases. So सबसे पहले हम लोग MongoDB के अंदर अपना entry file बनाते हैं, which is server.js. So once we start creating test, what we need to do is first of all test the connection for ourselves, correct? So for that, अब हम लोग वो ODM install करेंगे. कैसे करेंगे वो ODM install? Let's clear this out. And I will say npm install. The name of the ODM is Mongoose. Mongoose is the ODM which is going to help us connect to the database जो अभी हमने create किया हुआ है. npm install Mongoose, and this is going to install this particular library for me because I would require this in my local system. All right, now to do this, yeah, we have this, and now the second thing that I'm going to install is npm install Mocha. So Mocha is a testing library which helps us to test our database. उसका pre-written कुछ format होता है, उसके वेब हुक्स हम लोग यूज करेंगे और उस हुक्स के बेसिस पे हम लोग अपना टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे. ओके, इज माय वॉइस लो टुडे? आर यू गाइस एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? ओके, let me just connect the mic. 1 second. Just give me a second.
Can you hear me? Can you hear me better now? All right. Cool. So हमने ये दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लिया। अब इन दो लाइब्रेरीज का करें क्या, उसको यूज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना कनेक्शन क्रिएट करते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन से। So how do I connect it? So first of all, since we are using Mongoose and Mongoose is going to be responsible for connecting to the database, we would require Mongoose, right? So it will be providing us with different methods to interact with MongoDB. Uh, we would need to know that we have a MongoDB running in the background or not. But वो सारी चीजें हमें अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको क्लाउड में डिप्लॉय कर दिया। तो हम लोग सीधे Mongoose इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल क्या यूज करते हैं, एंड आई विल यूज द सेम नेम एंड आई विल से रिक्वायर Mongoose. Okay, so Mongoose is something like an ODM which interacts with the database from our node. तो हम लोग node के थ्रू एक request भेजेंगे to my database. Mongoose is going to convert that into something that is going to be our interaction between the two. Is it getting a little noisy? Okay, I think this is a more sensitive mic and that's why I'll remove this. ठीक है. Is it better now? ये ठीक है? ओके, ऑलराइट। ज़्यादा अच्छा माइक होने से आप लोग को परेशानी हो जाती है बिकॉज इट कैचेज अ लॉट ऑफ नॉइसेस, राइट? इट इज़ वेरी सेंसिटिव। ऑलराइट, so we have required this. Now, how do I connect to the database? So to connect to the database or MongoDB, we are going to use this Mongoose instance, and I am going to use a connect from here. So ये अब Mongoose is going to help us make the connection to the database from our node. Now there are parameters that are required inside this, and the parameter is basically your URL जो अभी हमने connection URL create किया था या देखा था, वो वाला URL is required over here. So for that I need to go back to my database, which was this. Nope, wrong window. Where did it go? Yeah, so just a second. Yeah, so now you see there is also a connection saying connect your application. Okay, so this is where I am going to use this. So this also has this URL and it also has the DB name. What DB name I'm going to create? So at the moment I'm going to copy this. अब क्योंकि I have whitelisted my system and I am trying to connect it to the database, I would require to pass that URL over here inside this like this. So if you see this URL, it is saying mongoose.connect and the name of the URL. So हम लोग करते क्या है? Better way of doing this is mostly these URLs and stuff are saved in a saved in a variable and we start using them over here. Okay, ऐसे करके यहाँ पे URL pass कर देंगे. But इस URL में you make sure that you use the password, give the password for the user. So basically I am the authenticated user and I will be using this password over here. ठीक है? This means it is going to connect internet पे जाके उस cloud service पे जाके connect करेगा, and I will also specify the database name. So I will call this as testing Mongo.
db, ठीक है, या टेस्टिंग लिख देते हैं अभी के लिए, टेस्टिंग. Okay, so I have made a connection, and what I'm trying to do is, there's a lot of noise from outside also today, a lot of traffic. तो हमने कनेक्शन कर दिया, but how do I make sure that this connection is made? So for that, I am going to use mongoose again and check whether the connection has been made or not. So there is this property called connection, and it is a default connection equivalent to mongoose connection, which basically checks for any kind of connection that is happening. तो जब भी ये mongoose.connect जब भी हम use करते हैं, I told you Node.js is a event driven it's a event driven language. तो हर चीज Mongo नोड में एक इवेंट की तरह काम करती है. तो जब भी ये कनेक्शन होता है, इट एक्ट्स लाइक अ इवेंट, और ये जो कनेक्शन है, ये वाला मेथड ट्रिगर होता है. आर यू गेटिंग इट? Whenever the connection happens, this gets triggered. Okay, so once this gets triggered, so if I do this and there is this on thing or a once thing, तो basically जैसे आपने on click, on submit या इस टाइप की चीज़ें आपने अपने फ्रंट एंड में देखी थी, सिमिलरली इसमें ये मेथड्स होते हैं, on या once. बेसिकली on जब भी कनेक्शन हो, ऑन में हम एक मेथड पास कर देंगे, या वंस में जब पहली बार या एक बार भी कनेक्शन हो, तब जाके कुछ हम इंस्टेंस पास कर देंगे. तो अगर मैं ऑन कर दूंगा, तो जब जितने बार कनेक्शन होगा, जितने बार हम डेटाबेस पे हिट करेंगे, उतने बार ये कॉल होगा, और ये वाला मेथड के अंदर जो भी हम पास करेंगे, दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड. बट इफ आई डू वंस, it will only get triggered once when the initial connection is made. Then we won't need it. So this is an event driven Node.js. That's why. So this is an event driven Node.js, and utilizing that, we are saying that, okay, once the connection is made, I need to pass couple of uh, parameters to this. First is type of event. किस type का event है? तो open, open, ठीक है? तो ओपन का मतलब हुआ कि जब भी कनेक्शन ओपन हो रहा है, एंड दिस इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड. व्हेन वी यूज ओपन, इट इज सेइंग दैट फायर दिस थिंग व्हेन द कनेक्शन इज ओपन. एंड द सेकंड थिंग इज अ कॉल बैक फंक्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्टली asynchronous in nature. ठीक है, asynchronous. Have I got the spelling right? Asynchronous. Yeah. So it might take some time to connect to internet. It might take some time for the reply to come back from the cloud services, or it might be down, or there must be something that is happening. तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, जब ओपन हो जाए कनेक्शन, तब ये वाला फंक्शन ट्रिगर करो, a callback function, right? And I will say console dot log connection to the database successful. Make sense? क्या कर रहे हैं हम लोग? जब कनेक्शन हो जाए, उसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग कर दो. तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग पहले सर्वर डॉट लिसन कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि कनेक्शन जब हो जाए, तब आप इसको प्रिंट करो, कंसोल डॉट लॉग. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं होता है, सो देर इज, इफ इट हैपन्स देन डू दिस. इफ इट हैपन्स ओनली वंस, एक बार भी हो जाए, डू इट. अगर नहीं होता है, डॉट ऑन. सो अब हम लोग ऑन भी यूज करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई इट एज एरर. अगर एरर होता है, so these are the keywords which specify if there is an error while the connection has happened. What you do is you print console.log unable to connect.
ठीक है, और एरर हम लोग रिसीव करते हैं, एंड इफ वी वांट टू show the error, I want to show the error as well. Does it make sense what is happening over here? Any doubt? नहीं नितिन, ऐसा हो सकता है कि जब आप कनेक्टेड हो, while you are connected, what will happen is, लेट्स सपोज कि सर्वर बंद हो गया, या कोई प्रॉब्लम हो गई, या आपके कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो एक एरर क्रिएट हो जाएगा while you are trying to make this connection. So every time I'm going to save or read or update or delete something, I'm going to make that connection every time. ठीक है, तो एक बार कनेक्शन हो गया सक्सेसफुल, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक दैट कनेक्शन ऑन पे वो बार बार ये वाला चीज हिट करेगा, बट एक बार जब कनेक्शन हो गया और उस बीच में अगर कुछ एरर होता है, या while making a connection some error happens, then I would want to log this, right? ठीक है, so let's see if this works or not. So I have saved this, and I will say node and run this particular file, node server. So it is giving me some warning, stuff like this. It's okay. But it says connection to database successful. That's awesome, right? Connection to database is successful. So to check whether the connection is successful or not, let's see if the testing database has been created or not. So we will go to our compass, and let's refresh this. And it hasn't been created as of now. So I think I will have to refresh it again. But it says that the, okay, yeah. The reason it is not showing right now because we do not have any tables. Cool. Why did I use Atlas? यार ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया तो था, क्योंकि एटलस के लिए मेरे को ये कनेक्शन दिखाना था आप लोग को. अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग थोड़ा डेटा क्रिएट करने वाले हैं. हम लोग थोड़ा वी आर गोइंग टू प्ले विद द डेटाबेस दैट आई हैव क्रिएटेड. तो ये टेस्टिंग डेटाबेस के अंदर अब हम टेबल्स, मॉडल्स, स्कीमा, ऑल दैट स्टफ आई एम गोइंग टू डू. एंड टू सी दैट आई वुड रिक्वायर सम प्लेस वेयर आई कैन सी इट, राइट? आपके लोकल सिस्टम में बेसिकली. तो लोकल सिस्टम में जब भी मैं कोई चीज़ क्रिएट करूँगा, जब भी कोई चीज़ क्रिएट करूँगा, तो मेरे को देखना है कि वो डेटा बना कि नहीं, टेबल आया कि नहीं. तो उसके लिए हम लोग कंपास यूज़ कर रहे हैं. कैन यू यूज़ लोकल स्टोरेज, लैपटॉप स्टोरेज? डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट. जो उसका सर्वर वाला था, जो मोंगो डीबी वाला कमांड है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. वो होता है आपका लोकल स्टोरेज. बट वेन यू आर ट्राइंग टू मेक दिस कनेक्शन, मेक श्योर इट इज़ अप एंड रनिंग. ये क्लाउड बेस्ड है, तो ये हमेशा चलता रहता है. हमने AWS सर्वर चूज़ किया हुआ है मुंबई का. उसका सर्टेन स्पेसिफिकेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं. जब आप लोकल क्रिएट करोगे, या इंस्टेड ऑफ लोकल वी आर यूजिंग द Atlas वाला, which is a cloud database. Okay? अगर आप लोकल कर रहे हो तो यू मेक श्योर योर डेटाबेस इज रनिंग. इफ योर डेटाबेस इज नॉट रनिंग लोकली, तो फिर प्रॉब्लम होगी. फिर वो कनेक्ट ही नहीं करेगा डेटाबेस में, बोलेगा कि मोंगो से कनेक्शन नहीं हुआ एंड ऑल दैट स्टफ. ऑलराइट, ओके. सो this looks like there are some deprecation warnings, which we will come back later on. But it looks like my connection to database was successful. Otherwise, ये error वाला base था. Let me close this and put a wrong name or something. Let's say user23. And now I will say node server. And it is trying to connect, and there is some rejections. There is a weird error that is coming. And here it says unable to connect. As you can see, unable to connect whatever we have written in the console, and it has printed the error that it got back from, right? तो ये एरर हुआ और उसने बोला कि भाई जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो नहीं कर पाया मैं,
and I am closing down. Like I cannot make any kind of a connection. Make sense? What is happening? So why is it important to have the right credentials, right URLs, and everything should be in place? All right. So we have made the connection. We have understood how Mongoose is helping us to connect to the database. अब हम लोग थोड़ा test driven development करते हैं. So what we will do is we will start creating some tests. Now we have this Mocha installed. Now to run Mocha, we might have to create a test folder first because Mocha is a library which helps us to test. तो यहाँ पे हम एक folder create करेंगे and I will call it as tests. Okay. And inside this, I am going to create my very first test, which is going to be the demo test. ठीक है, एक डेमो टेस्ट क्रिएट करते हैं. पहले समझते हैं कि टेस्टिंग होता क्या है और उसके बाद उस टेस्ट को यूज करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड MongoDB के different creation, deletion, updation and all that stuff. All right, cool. So now that we have this demo test, let's write some test. First of all, I am going to use an assert library. Okay, and this is a part of your so this is a part of your Node.js. There is a assert module. Assert का मतलब क्या होता है in English? To accept something, like to agree to something. Assert, right? To agree to something, right? कि हाँ 1 + 1 is equal to 2 है, right? If 1 + 1 is 3 कोई लिखता है तो we say नहीं नहीं ये गलत है, this is not right, correct? So this library is going to help us check those kind of scenarios where we are trying to check something, and we will do this add number wala hi check to understand how this works. Now when we are writing test, we describe the test name using the describe method. Okay, and it takes in two parameters. The first parameter is name of the test. Let's say adding and adding two numbers. This is the name of the test. ठीक है, बट ये कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो गया, राइट? कि हमने एडिंग ऑफ टू नंबर्स, लेट्स से कि हमें बहुत सारा टेस्ट करना है, एडिंग ऑफ टू नंबर्स भी करना है, सब्सट्रैक्शन भी चेक करना है एंड ऑल दैट स्टफ. तो हम लोग एक मेन नाम देते हैं इसको एंड आई विल कॉल दिस एज डेमो टेस्ट. सो फर्स्ट वी आर डिस्क्राइबिंग द नेम एंड द सेकेंड थिंग अगेन अ कॉल बैक फंक्शन. तो आप देख रहे हो कैसे एवरीथिंग इज अ कॉल बैक फंक्शन. अगेन बिकॉज I don't want my code to wait. Asynchronous nature of Node.js. I don't want my code to wait. So that's why this callback will be triggered whenever whenever this is subscribed or whenever this is being run, describe test. और यहाँ पे इसके अंदर we define what are the different tests I want under demo test. So to do that, I will use the it method. So it describes a specification or a test case with the given callback function acting as the thunk. The name of the function is used as the name of the test. So let's make it simple. Add two numbers. सबसे पहली चीज इसको देते हैं एक टाइटल स्ट्रिंग फॉर्मेट में, add two names name numbers. Add two numbers. And the second thing it expects is a callback function again. Yes, most of the test functions, right? Function name as in Venkatesh, what do you mean by function name? These function. Are you talking about these functions? These are arrow functions I'm using. You can use a normal function keyword as well. Import export नहीं यूज करते हम लोग, बट बाकी सारा ES6 वाला यूज कर रहे हैं. थोड़ा समझ आ जाता है मेरे Node.js को ES6 का, बस उसको import export नहीं समझ में आता. ओके, तो
function name to trigger. अभी हम लोग trigger करेंगे. Wait. We are going to trigger these tests. Now what we are going to do is I'm going to just say assert and this returns me true or false. अगर ये true हुआ तो सही है. It is correct. I assert the value. Agar it is false, then the test will fail. So 2 plus 3 equal to 5. This test should pass, right? ये वाला जो अंदर हमने कंडीशन पास किया है ये ट्रू होगा तो ये टेस्ट पास करेगा, असर्ट करेगा. अगर अंदर वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो it will fail the test. Okay, so I have written a very basic, very first test. So how should I trigger this? Coming to the question. Now to run this mocha test, uh, you have to actually go to your package.json और थोड़ा टेस्ट का जो स्क्रिप्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा. एंड इस टेस्ट के स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए यू नीड द नेम की मौका. ओके, चेंज इसको हटा के हम लोग लिखते हैं मौका. अब काफी चीजें आप लोग relate back करना to everything that we have done till now on different tech stack for mod. तो आप इसको सेव करते हैं. And now once you have done this, what you need to do is you need to first go ahead inside your, where did my terminal go? Suddenly my terminal disappeared. 1 second, I'll add a new one. Yeah, so clear it out. cd mongo, sorry. Okay, now to run this test I have changed the script to mocha and you will say npm run test hyphen mocha. So let's see what happens. When I run this, it will start its test and it says 0 passing. And the reason it is 0 passing is I haven't saved anything over here. Demo test बना लिया है हमने, but उसको save नहीं किया था, तो वो test folder के अंदर उसको कुछ मिला नहीं. So let's run it again. Hopefully this time it will pass. And you see that name of the test is over here and it says 2 numbers. Add 2 numbers is passing. Make sense? अब इसको fail करके देखते हैं. I will say 2 plus 4. Save कर दिया. And now I'm going to run test. So once I run this test, what do you see? It says 1 failing, right? So Mocha is a kind of a testing library which helps us to write our test cases. इतना समझ में आया? इसमें हम 2 टेस्ट लिख सकते हैं, मतलब अपने डेमो टेस्ट के अंदर एक और it ब्लॉक डाल सकते हैं. And I will call this as subtract 2 numbers. Okay, और एक और callback function लिख दिया और उसको बोला assert 1 minus 1 equals 0. True होगा तो pass होगा, false होगा तो fail होगा. So let's try this. Let's see what happens. तो अब इसमें देखना एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा होगा, या पहला ही फेल हो गया शायद. हाँ, एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, right? So it tells me कितने टेस्ट हैं. The one that fails is in red. The one that pass has a tick in front of it. ये समझ में आया? Test driven environment कैसे create करते हैं? Mocha is a very famous library though. You will, if you go and research on it, you will find a lot of things on Mocha. Any doubt in this one? Anyone having any doubt? तो हमें पता है कि हमें करना क्या है. Now since server is not inside my test folder, तो वो Mocha read ही नहीं करेगा. तो test folder बनाना जरूरी है
package.json में we need to change the script for test, and we can say npm run test hyphen hyphen mocha, and it will run the mocha test. All right, cool. So let's test our connections, that whether my connection is working fine or not. Okay, so what I will do is, uh, let's write a test over here and call it as, create a new file, and I'll call this as connection.js. What if we want many libraries in single.js? As in, what's your question, Venkatesh? Can you elaborate by unmuting yourself? What if we have many libraries in single JS? As this is Mocha test, we have changed the name to Mocha, right? Okay, that way. So that is not how it works. जब हम अपना Node.js चलाते हैं तो बेसिकली हम या npm react चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं. उसमें बेबल की भी लाइब्रेरी होती है, फिर हमने खुद की React की लाइब्रेरी लिखी होती है. So there is a deeper connection in creating those kind of networks. And then what we do is we just say that go ahead and run one particular main parent, and from that parent subsequent things start working. ठीक है, तो मल्टीपल चीज चलाने नहीं चलता है. You have to create such kind of a package. So ये package actually is handling everything inside it. ऐसा नहीं है कि 25 चीज आप यहाँ पर लिख दो. There is a way of doing that, but do not think in that manner. Like multiple libraries अगर आप use कर रहे हो, you will be using it in your uh, project. You will be using it inside your project. Okay? Alright. तो हमने यहाँ पे connection.js किया है, और इसके लिए ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, इस पूरे कोड को exactly as it is कॉपी करके connection.js में डाल देते हैं, because this is inside test folder and this will help us to check this connection. All right. तो हमने यहाँ पे डाल दिया इसको. अब इसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लिखेंगे, सीधे चला के देखते हैं टेस्ट होता क्या. npm run test hyphen hyphen mocha, and it will start and it will scan through this. I think we are still failing on this. And as you can see, it is also running the connection to the database is successful. Correct? But what we see is, I don't want my tests, like my test runs well and fine. Yeah, everything will run. Everything inside your test folder will run as a part of your test. So इसलिए Mocha goes inside the test folder and runs all these things. Okay, so let me close this. इसको ठीक कर लेते हैं टेस्ट को. But what do you see? Do you see like my tests are running? यहाँ पे मेरा connection start हुआ, right? यहाँ पे ये warning आ गई, इसका मतलब कि connection to the URL has started. उसके बाद ये सारे टेस्ट चालू हुए, उसके बाद कंटिन्यू हुआ ये वापस आके, और उसके बाद इसने बोला कनेक्शन टू द डेटाबेस इज सक्सेसफुल. Logically we should always have our connection before making any kind of a changes to the database, right? Without any connection to the database, it will not make any kind of sense, or it will start failing. Correct? Yes? No? So to do that, we are going to use some of the hooks, Mocha hooks, which are going to help us make a test, check that ये जो connection जो हो रहा है, ये होने के जो बाकी सारे टेस्ट हैं, ये कनेक्शन होने के बाद चले. ठीक है, तो उसके लिए there is this method
called before, और इसके अंदर हम लोग एक, this is specific to Mocha, okay, do not start writing before in your node.js. ये Mocha से specific library, uh, and inside this there is a callback function, और ये callback function is basically what we want to do before running any kind of test, okay. And now what I'm going to do is I am going to copy this whole thing and move it inside this before hook. So what this before hook does is it makes sure before running any kind of test. अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पे randomly मेरा पहले टेस्ट चालू हुआ कनेक्शन का, फिर डेमो टेस्ट चालू हुआ, उसके बाद कंटिन्यू हुआ मेरा कनेक्शन टू द डेटाबेस. आई डोंट वांट दैट. आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल आप कनेक्ट करो डेटाबेस से and then do any kind of test that is there. So wherever it will encounter a before hook, it will wait for this to complete and then move on to the next tests. All right. So let's run this. Let's just keep a before hook over here and run this particular thing. Okay. Okay. There is one more thing to this. So ये जो callback function है, it receives a parameter called done. So I will say that okay, ये कब done होगा, वो parameter को हम activate करेंगे and it will tell Mocha that okay, I'm done with this. Now you move on to the test. So I want to call it once I am done with the connection over here. Okay. So now what I have done is I have created a before hook which receives done in its callback, and I'm specifying that okay, if you are done with the connection, I will call it over here and then it will move on to the test. So let's take a look, clear it out and run the test. And this time you will see the tests are going to run after the connection has been made. Did I not save it? I did save it, I guess. Okay, I think I did not. इधर उधर का होगा कुछ, enter दब गया होगा. And what do you see? Connection to the database is successful and then it moved to the demo test. Understanding what is happening? हमने क्या किया? Everyone, because now I am going to move to database, क्योंकि अब टेस्टिंग का फ्रेमवर्क हम समझ लिए. अब हम इसी फ्रेमवर्क को यूज कर करके अपने डेटाबेस सेट करेंगे, वहां पे सेव करेंगे चीजें एंड देन वी विल कम बैक. Yes, no, doubts, scared, unable to understand? What is the status? Yes. So let's do that, what Nikhil is asking. So let's give a wrong URL. हटा दो इसको, सेव करो, कंट्रोल C से हटो, बाहर आओ and run the test. So it will start over here and it is trying to run this, and what is happening is before all hook in the root. So one failing which is basically ये जो before वाला function है, वो बोला कि यहाँ पे इसके बाद में जा ही नहीं पाया and therefore it starts to fail, right? So it doesn't go until unless this is done, this connection is done, I'm not going to move ahead. All right, so let's go ahead and create our schemas and models, because हमने specify कर दिया कि चलो testing database बनाओ, और अब हम लोग थोड़े टेस्ट लिखेंगे जिससे हम MongoDB में डेटा सेव कर सके, रीड कर सकें, do things like that. So for that, first of all, let's understand how we create models. So now I'm going to create models, and inside this हम लोग अपना user model पकड़ेंगे and we will start creating a user model, a very basic user model. Okay, so inside this I am going to create a user .js. So naming convention should be precise.
whatever you are trying to achieve, whatever the name of the model is, you use that single responsibility principle. एक मॉडल सिर्फ एक टाइप का डेटा हैंडल करेगा. Okay, so to create model we need to specify something. We need to specify कि schema क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, and all that stuff. We need to specify, right? So to do that, what we would need to do is we need to make these users a specific model कि कैसा data store होगा या कौन सी चीजें होंगी इस particular model में. So now we would require mongoose again because I'm going to make a connection to the database. I'll say require mongoose, and from this mongoose I will create a schema. So I will call this as const schema, and this is going to be the function from mongoose called as schema, S capital. ठीक है, तो हमने ये schema property extract की. अब इसको use करेंगे to create schema and model for our uh, for our database. Okay, तो इसके लिए सबसे पहले let's create users. I will say this is a user schema और एक new instance of the schema बना रहे हैं. I hope you are getting it what I'm saying because this is a instance. हमने एक ऐसा class extract किया या internally under the hood they have written a schema class जिसका हम instance create कर रहे हैं using this. Inside this we pass the object. We pass the object or of the model कि कैसा हमारा model दिखने वाला है. So I will say it should have a name and this should be string. Okay, it should have an age which should be a number, right? Something like this. So let's keep only two things as of now. So we have a age and we have a name. तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो भी हमारा डेटा यूजर का क्रिएट होगा वो इसको फॉलो करेगा. Okay, so now I am going to create an instance of a model. So once we have a schema set, now we will create an instance of a model. Basically हर बार एक रो या नई एंट्री जब भी आएगी it is going to be in this format. So हमने ये rule set कर दिया schema में कि उसका string और number होना चाहिए. So let's do that and I am going to create users. ठीक है, अब mongoose का model method use करते हैं. Model method, and what does it expect? It expects the name of the document or the table. So I will create a user table. ठीक है, capital user. बेसिकली हम लोग एक यूजर टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं. तो ये जो मॉडल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो यूजर के लिए क्रिएट कर रहे हैं. एंड वो how is the data for this model is going to be, that is going to come from user schema. So I'm specifying that the name, this name will come in our database as the name of the table, and this is going to be the user schema. Okay, so when I do this it should be utilized. It should create a user table in my database. तो अब हमने मॉडल क्रिएट तो कर लिया बट इसको यूज करना है कहीं और, क्योंकि कहीं और से हम डेटा सेव करेंगे, कहीं और पे डेटा हम सेव करने की कोशिश करेंगे. तो module dot export, if you remember, and what should I export? You tell me, what should I export from here? What should I export from here? Any takers for this answer? User schema. हमें अब बस बेसिकली डेटा सेव करना है. वो हम किस में सेव करेंगे? यूजर्स में. जो भी यूजर्स का इंस्टेंस होगा, जो भी हमने यूजर का
क्रिएट किया है बेसिकली मॉडल, हमें मॉडल एक्सपोर्ट करना है क्योंकि अब इस मॉडल पे वी आर गोइंग टू वर्क। हमने मॉडल को बता दिया है कि यूजर स्कीमा से पढ़ो कि कैसा डेटा होना चाहिए। सो हम लोग अब बस इस मॉडल को यूज करेंगे और इसमें पास करेंगे डेटा, ऐसा नेम और एज वाला, सो दैट इट कैन पिक इट अप एंड सेव इट। ये डेफिनेशन है कौन से टेबल पे स्टोर करना है या डॉक्यूमेंट में स्टोर करना है, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट, व्हाट आर द फील्ड्स हैज बीन डिफाइंड, एंड दिस इज द मॉडल दैट आई हैव क्रिएटेड and I am exporting this model. All right, so I have created a very basic model. Now let's go ahead and write a test for saving our very first data. Okay, let's go ahead and start saving data and see if it works in our database or not. Yes, export default is a part of your ES6 scheme, Vikram. बट ES6 आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको उसके लिए थोड़ा Node.js में changes करने पड़ेंगे आपको, Babel and polyfill and all that stuff you have to integrate or get it in your package.json. So last time I checked, Node.js was not very familiar with the ES6 import and export, but yeah, we do use it, import and export in Node.js as well. And for that, we might have to install a lot of libraries, Babel libraries. Okay, so now I'm going to create a new test and I will call this as saving data dot, I'll name it as test.js. Okay, तो अभी आप लोग को कोडिंग भी आप देखना कि हम लोग करते कैसे। हर एक फाइल में अपना एक काम हो रहा है, which is a single responsibility principle, and these files are being used across our application. एक फाइल एक जगह बना दी और उसको हम लोग across the application use कर रहे हैं. So we are coming to save this data. So for this, first of all, हम लोग, since this is a test, I would like to assert something like कि save हुआ कि नहीं data or something like that. So I will do this and assert the values. And the second thing I would require is this model that I have just now created, because what I want to do is I want to save the user data. So I would require this user data का model to specifically say कि मेरा किस type का data हम save कर रहे हैं. So I will say const users is equal to require. Now this is going to be my specific module, right? So I'll have to go out, /out inside models users. क्योंकि हमने export किया है, it will come over here and now I can save it, right? So now if I can save it, I will describe a test. I will say saving records, and this will have a callback function, and the first thing that we would require is it saves a record to DB, let's say, and then it will have its own function callback के अंदर callback. This is what we call as callback hell, but अभी हम लोग उतने callbacks लिख नहीं रहे, so it is not going to be an issue. Okay, now we are very close to save a data. तो अभी हमारे पास ना कोई फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फॉर्म में जो कि हम डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, बट लेट्स थिंक कि हमने कोई क्लिक किया और उसने डेटा भेजा, तो उस डेटा को हम कैसे सेव करेंगे? तो बेसिकली हम लोग नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यूजर्स का. ओके, लेट्स मेक दिस कैपिटल. नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यूजर्स का और इसके अंदर वो डेटा पास कर देंगे. I will pass name John and age 23. Make sense? ये हम कर क्या रहे हैं? यूजर्स को इंपोर्ट किया, यहाँ से हमें पता है यूजर्स कैसा है,
उसका डेटा कैसा होना चाहिए, और इसी मॉडल का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ आवर मॉडल्स, राइट? So this is basically now we are creating rows of the table, if you can think it that way. Basically we are creating the document. So let's save it in a variable called new user. ठीक है, तो एक नया यूजर आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके सेव कर ले रहे हैं. So we are using the users model which is going to give us this functionality, and we are creating that user. So right now what we have done is we have just created an instance of a user. We haven't saved it yet, right? Do you agree? We have just created an instance of a user using the predefined model. This is what we have been doing बहुत टाइम से. सब चीज़ में जब हम रिक्वायर कर रहे हैं या mongoose का कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो mongoose का प्रीडिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करके हम उसके फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं. सिमिलर फैशन में हमने खुद का एक मॉड्यूल बनाया यूज़र करके, और उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया, बट अभी तक हमने सेव नहीं किया है, हमने बस एक इंस्टेंस क्रिएट किया है. सो टू सेव दिस, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एक टास्क दूंगा. हो सकता है अभी ना समझ में आए, बट आप वो चीज़ पढ़ लोगे तो बाद में समझ में आ जाएगी. बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोमिसेस. और हम लोग ने एक्चुअली बहुत सारे प्रोमिसेस वाले फंक्शंस यूज कर चुके हैं. यू नो व्हाट प्रोमिसेस आर? सो इट्स बेसिकली एक प्रॉमिस किया किसी फंक्शन ने, और बोला कि ठीक है मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ करके दूंगा, तुम जाओ अपना काम करो. जब हो जाएगा प्रॉमिस, तब तुम कोई भी अपना फंक्शन लिख लो यहाँ पे, वो एग्जीक्यूट करना. सो इट्स बेसिकली आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन some method which is going to return me a promise, and then so once the promise is resolved, so this returns basically resolve or reject. ठीक है, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा. तो अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है देन डू दिस, अदरवाइज हम लोग कैच कर लेंगे उसको और वहां पे थोड़ा अलग फंक्शन लिख देंगे. ठीक है, this is a very high level understanding of promises. I would definitely recommend you to read on promises and ask me questions around it. We are going to use more, so we have used most of the methods which are promise based methods. Okay, so let me show you what I mean. I'll show you what it means. So हमने ये instance create किया है. ठीक है, तो इस instance को उठाते हैं और एक डॉट सेव मेथड यूज करते हैं. ये डॉट सेव मेथड कहाँ से आया? ये डॉट सेव मेथड आया तुम्हारा mongoose से. Basically mongoose is going to provide me this dot save method. Okay, so why mongoose? Because new user is an instance of this particular model which is a part of mongoose. So dot save will be implied on this. So once this save is done, dot then, so what I'm saying is सेव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या इफ यू आर रीडिंग सम डेटा इट माइट टेक सम टाइम. सो इट विल से ओके, I am going to return you some promise, and based on that you can create some functionalities. So I'm saying okay, once this save is done and there is a positive response from the database, because this is going to hit and connect to the database. So dot then assert, जब सेव हो जाएगा, what I would want to assert is ये जो न्यू यूजर है, sorry, the new user is equal to should be is new. So there is this flag called is new. हम चेक कर रहे हैं कि ये क्या न्यू यूजर नया है कि नहीं है. एंड दिस अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर mongoose. ठीक है, mongoose लाइब्रेरी के अंदर is new एक ऑप्शन होता है. तो हम लोग is new चेक कर रहे हैं. It should be false because it has already been saved, right? It should be false because it is already been saved and then it is responding to me.
So I'm just going ahead and checking कि क्या ये new user नया है? नहीं, ये नया नहीं है, right? So this is a very basic test. Let's go ahead and run this. Now before I run this, I also need to specify कि ये it वाला test खत्म कब हो रहा है, right? Similar to our before, ये it वाला test खत्म कब हो रहा है? तो ये वाला जो callback है, इसमें we provide done, and here I say okay, now I'm done with the test. Now move on to the next test. I can have multiple tests after this, right? Similarly, so I've written one such test. Now let's use this. कितने लोग भाग गए आज? This is the worst part about MongoDB. People like run away from it. And I'm trying to solve this problem, but still haven't got any solution. Anyway, all right. So let's do this. And I will say npm run test mockup. Everything should work seamlessly at the moment. Let's cross our fingers and hope that it works. And did I not change the connection string? Yeah. So the finger crossed didn't work. All right. All right. All right. And we have a successful saving of the record. How do I test it? Whether the record is saved or not. So let's go to our compass and let's see refreshes, refresh it. Do you see a testing data? क्या दिख रहा है? एक testing दिख रहा है. अब इसको expand करेंगे. इसके अंदर एक user दिख रहा है. तो users क्या दिया था हमने? नाम दिया था अपने मॉडल का. और इसको अगर मैं expand करूंगा, so what do you see? Age 23, name John, and then there is an ID. So the reason I did not specify ID initially was because MongoDB auto generates a ID for a new user. ठीक है? It auto generates an ID for the new user. मैंने बोला था ना कि हमारा जो टेस्टिंग डेटाबेस है वो अभी दिखेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. तो आप देख रहे हो, दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट आई हैव क्रिएटेड. This is a collection that is there. User, okay, I gave you a wrong syntax. Initially, I think I told you um, document is the table name, right? Do not relate to table name. Collection is the table name. Okay? So collection is users and each row is the document, and document becomes your rows in terms of table, right? So this has saved the data and we have successfully made a connection from our Node.js to our MongoDB and saved the data using a test driven development. आज के दिन हम लोग ने कितनी सारी चीजें सीखी. Right? I think बहुत ज़्यादा information हो गया आज के लिए. But we will stop over here and I'm going to push this. I'll just remove, let's go back to the code that we had. Yeah. कितने लोग को समझ में आया? Percentage wise बताओ कितना समझ में आया? How much were you able to follow along? No responses. Worst part about MongoDB is I kind of lose responses. फ्लो समझ में आ रहा है ना? क्या क्या चीजें हो रही हैं समझ में आ रहा है? बस इसको प्रैक्टिस करना, चीजें देखना, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो कीवर्ड्स मैंने दिए हैं उसको प्लीज रेफर करना. एंड आई विल पुश दिस. क्रिएट अ सिस्टम, ट्राई टू रन अ सिस्टम, क्रिएट अ मॉडल ऑफ योर ओन, ट्राई टू क्रिएट. अच्छा, एक और चीज, आपने एक चीज देखा, मैंने यहाँ पे डेटा का नाम दिया था यूजर.
ठीक है, let's create person. मैंने बस नाम चेंज कर दिया, फिर से एक टेस्ट रन करते हैं. Let's I'll just show you a quick demonstration of something and I'll run this test. So नाम हमने बस ये नाम चेंज किया, बाकी सारा नाम चेंज है तो सेम है, so it won't create an issue for me. I'll go back to MongoDB, go to my testing, refresh this. You see a new table is created, right? And the table that has created is people. The name that I gave was, what was the name that I gave? Person, right? So what MongoDB does is it pluralizes the name of the collection. This is the name of the collection that is going to get created from the schema, and the data that we are going to receive should be in this format. Okay. So similarly, user के लिए उसने users कर दिया था, people person के लिए persons कर दिया था, because it knows that there are going to be multiple documents inside this. यहाँ पे भी देखो same data आ रहा है because हमने बाकी कुछ change नहीं किया था, but here it understands that. Okay. All right. So any doubts or MongoDBs के लिए query निखिल, जब आप स्पेसिफिकली डेटाबेस पे क्वेरी करना चाहते हो तो आपको सेम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो अभी आप पढ़ोगे. इसमें एसक्यूएल क्वेरी जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? एसक्यूएल क्वेरी जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, बट होता क्या है, वी यूज़ दिस जेसॉन फॉर्मेट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट में हम लोग यूज़ करते हैं अपना, वन सेकेंड, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट में यूज़ करते हैं. सो वी आर गोइंग टू मोस्टली यूटिलाइज दिस, एंड इवन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डीबी, अगर आपको कंपास में जाके खुद भी कोई चीज़ सर्च करना है या फाइंड करना है, सो once you see and pass the filters and all that stuff, the CLI has made it so easy for you in terms of working with this DB structure and adding or removing data. You don't have to actually run queries. Like इसमें SQL आता ही नहीं है कहीं पे, ये सीधा नॉर्मल Node.js की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ऑब्जेक्ट्स की तरह काम करता है. Okay. All right. So you can see uh, the schema as well. You can, there are a lot of things in this which might not be very good to have at the moment, but हमारा basis of MongoDB clear हो जाना चाहिए, उसके ऊपर आप build जरूर करोगे. All right, Vikram, to answer your question, yes, more the number of libraries you are using in a project, the slower it is going to get in terms of deployment, because there will be a lot of libraries involved and there will be a lot of dependencies. So whenever you are creating any project, you will keep on adding different node modules, and once you keep on adding different node modules, it is going to load then and there wherever you are deploying it, and all the dependencies are going to be there. But it doesn't mean that you don't use it. You use it judiciously. UI के terms में, yes, your libraries do make a lot of difference in your performance, but make sure you use the right, remove the unnecessary part. उसके लिए थोड़ा सा debugging skills चाहिए होता है, उसमें एक performance tag होता है, and then there is this Chrome audit where you run your front end and check how your website is performing. All right, cool. So I will remove node modules and package.log.json भी हटा दो, कल वापस इंस्टॉल करेंगे इसको, और ये मैं आप लोग के पास भेज रहा हूँ. Now you will have to take care of it, work on it, play with this. Let's go out of this one. All right, let's see the status.
added MongoDB, git add, git commit, minus m, and MongoDB, Mocha, and Mongoose. Cool names, right? Triple M's. MongoDB, Mocha, and Mongoose. आज हमने तीन. We learned about three M's. Git push origin main. Look at the number of things that we have covered in a span of 1 month. All right, cool. Chalo, so I will see you guys tomorrow. Uh, Read on this. Do read on promises, promise library of JavaScript, because most of the functions that we have used, methods that we have used are promise based. And we are going to build tomorrow on, we have saved the data. Now we are going to read the data. We are going to edit the data, and we are going to delete the data. So we are going to understand all that functionality. Okay. All right, guys. So I will see you guys tomorrow. Bye bye. Take care. I'm stopping the share, stopping the meeting. If you don't have any kind of doubt, is there anyone having any doubt? Let me know. We still have 5 7 minutes. Yes, no? Okay, I'll take this as a no. Good night. Take care, guys. I will see you tomorrow. Bye bye.